Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss about remedial measures of secondary education. The following are remedial measures of the problems of secondary education. बच्चों आज हम सेकेंडरी एजुकेशन के रेमीडियल मेजर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला रेमीडियल मेजर जो है, नंबर 1, प्रोविजन ऑफ एडिकेट फंड्स, कि एडिकेट फंड्स हमें उसके लिए प्रोवाइड करने पड़ेंगे। Both the central government and the state government should spend a good amount on the progress of secondary education. दोनों मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतें एक अच्छा रकम सेकेंडरी एजुकेशन की तरक्की के लिए, की प्रोग्रेस के लिए खर्च करें, क्योंकि because there is lack of finance and so both the government should spend a good amount on the progress of the secondary education. The second one is to provide trained, experienced and qualified teachers. जैसा कि हमने पढ़ा कि सेकेंडरी एजुकेशन में जो कमियां हैं, इसको प्रोग्रेस देने में there is lack of trained, experienced and qualified teachers. अगर हम चाहते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन उसमें सुधार आ जाए, तो हमें ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड टीचर्स इसमें एडजस्ट करने पड़ेंगे. The positive, better, constructive and effective results can only be expected from trained, experienced and qualified teachers. हम अच्छे रिजल्ट तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम इसमें ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड टीचर्स हम फराहम करें. और तीसरा है टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन. द एग्जाम्स मस्ट नॉट टेस्ट crammed ability of the students or candidates, but it should make the assessment of the entire personality of the students. जो इम्तिहानात जो हैं वो सिर्फ बच्चे की सिर्फ रटने की एबिलिटी का इम्तिहान ले कि बच्चे ने कुछ सवालात रट लिए तो उसी का इम्तिहान लिया जाए, बल्कि उसकी सारी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाए, तखमीना लगाया जाए कि उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या है, उसकी सारी पर्सनैलिटी के बारे में इम्तिहान लिया जाए. मोर स्ट्रेस शुड बी गिवन टू ऑब्जेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स जो हैं तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप बनाई जाए, जिसमें बच्चे की काबिलियत का पूरा इम्तिहान लिया जाए. फोर्थ वन इज बैलेंस्ड सूटेबल करिकुलम. The curriculum should, in accordance to the needs, requirements, abilities, capabilities, potentialities, and interests of the student. और जो हम करिकुलम फ्रेम करते हैं तो वो बच्चे की ज़रूरियात को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को और उसकी सलाहियतों को
اور اس کے اندر جو پوٹینشلٹیز ہیں یا ان کی انٹرسٹس کے مطابق کیریکولم کو بنایا جائے۔ پانچواں ہے impressive and most suitable methods of teaching. The methods of teaching should be quite suitable, appropriate and inspiring. Methods of teaching جو ہیں، جو پرانے طرز کے ہیں، ٹریڈیشنل ہیں، ان کو چینج کیا جائے، ان کو امپریسو اور سیوٹیبل بنایا جائے، وہ بچے کے ذہن کے مطابق ہوں اور بچہ پڑھنے میں دلچسپی لے جائے اور اس کو اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امپریسو اور سیوٹیبل میتھڈز اختیار کر لیں۔ چھٹا ہے امپرومنٹ ان دا میڈیم آف انسٹرکشن۔ The regional languages and Hindi should be made as a medium of instruction to teach the various subjects in secondary schools. چونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ بچے جو دور دور فار پلنگ ایریا میں رہتے ہیں، ان کو جو ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن ہے انگلش ہے، اچھا اس پر ان کو ہولڈ نہیں ہے اور وہ سارے سبجیکٹوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں علاقائی زبانوں میں اور خصوصاً بہت سارے اسٹیٹوں میں جو ہندی ہے، ان اسٹیٹوں میں ہندی اور جن اسٹیٹوں میں جو علاقائی زبانیں ہیں، تو انہی زبانوں کو میڈیم آف انسٹرکشن بنایا جائے مختلف سبجیکٹوں کو پڑھانے کے لیے سیکنڈری اسکولوں میں۔ تو یہ ریمیڈیل میجرز ہیں جن کے ذریعے سے ہم سیکنڈری ایجوکیشن کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی